Hello and welcome. My name is Zaffar Iqbal and you are watching the Mojo Story. A major tragedy has struck India. A horrible railway accident in Odisha, in which at least 280 people have died and more than 900 people are injured. Now you can see on those visuals, these are top visuals of that accident, basically involving three trains, including two passenger trains. You can see the devastation that's been caused by this accident. These are three trains colliding with each other, and that's resulted in this massive loss. 280 people have lost their lives and 900 are injured. Now, Prime Minister Modi will be going to the site of the accident, and he'll be going to Odisha today, in fact, and he'll visit the Balasore where this accident has taken place, and also go to the hospital later. The railway minister also visited the spot and also spoke and gave details about the accident. If we can start by hearing what the railway minister said. Yeah. एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। परिवारों के मेंबर चले गए हैं, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सुरों में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा।
अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। Okay. The inquiry will be conducted. That's what the minister said. But right now, obviously, the focus is on rescue and relief operation that is going on. The details that we have got is that the trains involved in this accident, Shalimar Chennai, Coromandel Superfast, Howrah Superfast Express, and a goods train. Those are the trains that are involved in this accident. Now, more than 100 medical teams with paramedical staff uh, have been have been mobilized, and now these are the latest visuals that we are getting in. The Prime Minister is in fact chairing a high-level meeting in which obviously details are being shown to the Prime Minister that what exactly happened. Senior officials are there as well, and Prime Minister is is having a high level meeting right now, taking stock of the situation. We're told that is one of the biggest train accidents that's taken place in India in the recent past. These are latest visuals that we are getting. The Prime Minister really being briefed about this train accident. Prime Minister will be going to Odisha today. He'll be going to the site of the accident, to the place where this accident took place, and also he'll be going to the hospital. 900 people who are injured have been moved to the hospital. So those are the latest visuals that we are getting. Prime Minister really taking stock of the situation, being briefed about the accident. Basically, we joined from Odisha, from the place where this accident took happened. Adhip Jaina, who's a journalist. Adhip Saab, वेलकम टू द शो। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पे पूरा फोकस है इस वक्त, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? अभी जो वो जोर पकड़ लिया है, लेकिन कल शाम को जैसे ये एक्सीडेंट हुआ तो तकरीबन 1.5 घंटा तक को कोई भी सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाया था। जो लोकल पब्लिक है उन लोगों ने रेस्क्यू स्टार्ट किया, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कैसे ट्रेन से आदमी लोगों को निकालना होता है, कैसे कटिंग होता है, जो दबके रहते हैं उनको कैसे निकाला जाता है, वो लोकल पब्लिक को पता नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्क्यू टीम है वो 1.5 घंटे के बाद पहुंचा। अंधेरे का वजह से वो रेस्क्यू हो नहीं पाया, बहुत धीमे तरीके से हुआ। फिर जब भी एनडीआरएफ का टीम, ओड्राफ का टीम और रेलवे का टीम तकरीबन 2 घंटे के बाद पहुंची, तभी रेस्क्यू का स्पीड थोड़ा ज्यादा हुआ और रात भर रेस्क्यू होने के बाद जितने भी इंजर्ड थे सबको हॉस्पिटलाइज किया गया और जो भी डेड बॉडी है वो अभी भी निकल रहा है। अभी 2-3 बगी जो पूरा डैमेज है उनको गैस कटर के जरिए कटिंग हो रहा है और एक एक डेड बॉडी अभी भी निकल रहा है। तो जो आप दिखा रहे हैं कि 280 अभी नंबर हुआ है डेथ का, वो आगे भी बढ़ सकता है और जो इंजर्ड पर्सन है वो अभी भी और भी बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि जो भी इंजर्ड पर्सन है वो आसपास का जो भी हॉस्पिटल है, जैसे बालेश्वर का मेडिकल कॉलेज हो गया वहां पर, और नियर बाई जो सोरो है, बाहनगा है, गोपालपुर है, भद्रक है, ये सब हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जो भी ज्यादा सीरियस है उनको कटक या नहीं तो भुवनेश्वर एम्स में एडमिट किया हुआ है। तो सबका कैलकुलेट करने से ये इंजर्ड पर्सन का कैलकुलेशन 1000 से ज्यादा हो सकता है। अभी जो रेस्क्यू फाइनल रेस्क्यू चल रहा है वो जो 2 बोगी है जो ज्यादा उस डैमेज हुआ है उनको गैस कटर के जरिए रेलवे का जो स्पेशलाइज्ड टीम है वो कटिंग करके निकाल रहे हैं, ये पूरा सर्च कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपका कहना है कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और ये जो अभी फिगर भी है ऑपरेशन ये फिगर बढ़ सकता है, जो ये फिगर हम अभी बता रहे हैं वो बढ़ सकता है। बढ़ अभी सकता है। अभी ये नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर है वो कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। By this extremely tragic train accident, I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed?
Railway safety should always be given the first preference. First priority will be for suffering. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. You must be very upset now, sir. Right. Obviously, the CM giving details and saying that the injured have been moved to the hospital. Right now the focus remains on rescue and relief operation. The priority is to really clear the debris and to move out any more people who could be buried under it. You can see from these visuals, horrific image really. The trains have been moving at a very high speed when they collided with each other. That's a clear indication from these mangled coach, and there are a lot of people there who have been helping with the people from the administration and trying to help all those who are trapped in that debris. Those are the top shots. You can see what is the accident, the devastating accident that has caused so much of a human loss. So many people have died and so many others are injured. Let's go back to our guest who joins us from the ground. आप बोल रहे थे कि अभी हालात ये है कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है और ये संख्या बढ़ सकती है, और जाहिर है उसके बाद जो भी ये लोग हैं, जो भी इसमें जिनकी डेथ हो गई है, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनको उनके परिवार वालों तक पहुंचाना बॉडीज को, वो एक मेजर टास्क है, क्योंकि डेड बॉडी एक जगह पर नहीं है। वहां पर जो स्पॉट इंसिडेंट हुआ है वहां के स्कूल में ज्यादातर डेड बॉडी है, और बालासोर मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडीज है, सोरो मेडिकल में डेड बॉडीज है, भद्रक मेडिकल में डेड बॉडी, तो बहुत जगह पर डेड बॉडीज है। तो वो उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा टास्क है। ज्यादातर जो स्लीपर कोच में या एसी कोच में जाते हैं उनका तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, लेकिन जो जनरल बोगी में जाते हैं, ज्यादातर जो डेथ रेशियो है वो जनरल बोगी में है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनमें एक तकलीफ और भी है कि दो ट्रेन है, एक करमंडल का है जिसमें एसी बोगी या स्लीपर कोचेस का लॉसेस ज्यादा हुआ है, लेकिन जो यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन है उनका दो जनरल बोगी वो टोटली लॉस हो गया है, उसमें ज्यादातर डेथ वो दो जनरल बोगी में से हुआ है, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा टास्क होगा और इसमें काफी समय लग सकता है। हम देख रहे थे, हाँ, समय लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स जो वहां के लोकल है उन्होंने, क्योंकि आप भी वहीं ग्राउंड पे बेस्ड है, वहां पे उन्होंने काफी कोशिश की, खासकर ब्लड डोनेशन की बात है। अस्पताल इस तरह से क्या वहां पे इक्विप्ड है कि इतने संख्या में जो घायल है वो उन अस्पतालों में एडमिट हो सकेंगे, इतनी उसमें कैपेसिटी है क्या? वो कैपेसिटी 100% नहीं होने से भी मैनेज कर लिया गया है कि सारे के सारे जो जितने भी इंजर्ड आए थे तो वो सबको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो ब्लड का जरूरत था, कल एक रिक्वेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आया कि ब्लड डोनेशन करने के लिए, तो बालासोर सिटी से इतना यूथ जनरेट हो गया कि ब्लड डोनेशन करने के लिए, तो ब्लड डोनेशन इतना हो गया तो ब्लड बैंक को मना करना पड़ा कि ब्लड अभी और नहीं चाहिए, ज्यादा हो गया है। तो वो रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है कि ये जो भी सोशल एक्टिविस्ट है उसमें बहुत ही हेल्प कर रहे हैं कि उनमें जो ऑपरेशन से ट्रीटमेंट के नाम पे वो अच्छी तरह से हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विस, वो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सर्विस है वो बहुत ही सराहनीय है कि वो बहुत बढ़िया सर्विस दिया हुआ है। पूरी रात भर ये ऑपरेशन चला रहा। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी काफी काम किया। जिस तरह बोल रहे हैं, कुछ समय लगा अथॉरिटीज को अलर्ट होने में और वहां तक पहुंचने में, और उस समय जो वहां के लोग थे उन्होंने काफी हिम्मत करके कोशिश की कि जो लोग मुश्किल में है, जो फंसे हुए हैं, उनको मदद की जाए। हाँ जी, उसमें क्या हुआ देखिए, ट्रेन का बगी पलट गया है तो वो बहुत हाइट वाला है, तो घर से सब लोग अपना सीढ़ी लेके आए और बोगी के ऊपर चढ़े,
दरवाजा उसको तोड़े, फिर कुछ बच्चों को पहले निकाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी इंजर्ड है उनको निकाले। तो हिम्मत करके तकरीबन 2-4 हजार लोग तो ऐसे ही सर्विस देने के लिए खड़े थे। जो भी आया सर्विस देने के लिए भी तुरंत खड़ा हो गया। तो उसमें जो लोकल पब्लिक था उनका जो मोटिवेशन था वो एक्चुअली उनको आप प्रशंसा कर सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो तमाम फोकस है वो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर है। रिलीफ ट्रेन्स भी रास्ते में है या पहुंच गई है वहां पर। नहीं, अभी मैं उसमें इंटरेस्ट, क्योंकि ट्रैक टूटा हुआ है, इसीलिए रिलीफ ट्रैक टूटा ट्रेन हुआ है। स्पॉट के जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। उसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि ट्रैक टूटा हुआ है, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द रिलीफ पहुंचाया जाए। हमारे साथ में है देवव्रता मोहंती भी, जो भी उड़ीसा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, इसका तमाम जो फोकस है वो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन है, और इसके बाद ही इस पे इंक्वायरी होगी कि क्या हुआ था, किन कारणों से ये एक्सीडेंट हुआ, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। जाहिर है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बाद ही वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। जी सुन सकते हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन सकते हैं, आप बोलिए। जी, अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी रेलवे बता रहा है कि पहले डिरेलमेंट हुआ कोरोमंडल ट्रेन का, फिर उसके बाद उसने हिट किया, उसके आगे जो खड़ा था आपका गुड्स ट्रेन, फिर कुछ बॉगी जाके दूसरे ट्रैक में गिरी और वहाँ से दूसरे छोर से आ रहा था जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसको लास्ट 2 बॉगी को साथ उसके टकराया, फिर जाके उस दोनों जनरल बॉगी जाके नीचे एक बीच में गिरा। बिल्कुल, जो लोकल लोग थे वो लोग बहुत ही अच्छी तरह, मतलब वहाँ पे एक लोकल वीकली मार्केट चल रहा था, वो लोग बहुत जल्दी आए और बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया। लेकिन मतलब इस तरह की त्रासदी जिस तरह से मतलब डेथ हुआ, कहीं ना कहीं रेलवे का मतलब गलती है, कहीं मतलब टेक्निकल ग्लिच हो सकता है या वो ड्राइवर का गलती हो सकता है, कहीं तो कोई बहुत ही बड़ी गलती हुई है, नहीं तो इतना बड़ा ट्रेजेडी नहीं होता। बिल्कुल, एक लैप्स तो हुआ है कहीं ना कहीं, ये टेक्निकल लैप्स है, ह्यूमन लैप्स है। इस पे तो इंक्वायरी होगी, जिस तरह से मिनिस्टर ने भी बताया कि इस पे ज़रूर इंक्वायरी होगी। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो तमाम कोशिशें हैं कि जो लोग अगर अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और अस्पतालों में पहुंचाया जाए। जो घायल है, अगर वहाँ के लोकल अस्पताल में कैपेसिटी नहीं है तो पास के अस्पतालों में पहुंचाया जाए। जिस तरह से वहाँ के लोकल लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए वो इतने आगे कि ब्लड बैंक को बताना पड़ा कि अब ज़रूरत नहीं है, तो लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि जो लोग ये देख सकते हैं आप, ये विजुअल्स कितने भयानक विजुअल्स है, ये हॉरिबल विजुअल्स ऑफ दीज trains which have collided with each other. There are 3 trains, 2 passenger trains and 1 goods train. To recap for our viewers, 280 people have lost their lives and over 900 are injured. Now teams of the NDRF and other agencies are on the ground for the rescue and relief operation, but it's still taking some time. Obviously you can see these coaches are mangled and it will take some time so that to get a clear picture. We are also getting reactions from the ground. Let's hear what the Chief Secretary has to say. Injured and the latest situation of the train accident is like this. So far, around 900 passengers have been injured and various hospitals in Balasore, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur and Cuttack districts, including the 2 medical colleges of Cuttack and Balasore. Deaths, 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on. One buggy which has been very severely damaged and has been rammed into by another buggy. That only buggy is left,
NDRF, Odisha Disaster Response Force, and Fire Service personnel are still working with their machineries to cut the buggy and try to recover the living or the deads. This operation is getting little difficult in the sense it has been so badly damaged that possibly railway crane might also be required. The railway board chairman is there in the site. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. Regarding treatment, uh, treatment in government as well as private hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity and also are receiving the bodies. All efforts are made to complete the autopsies early, and whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kith or kin or will be transported to the respective destinations. The bodies which will not, which if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy. From Odisha, but we also know that 7 NDRF teams are on the ground. 24 fire service and emergency units have been engaged in the rescue operation. More than 100 medical teams with paramedical staff along with medicines have been mobilized at the accident spot. 200 ambulances have been engaged. Buses have been engaged for stranded passengers, and the injured 900 people who are injured have been moved to hospitals at Soro, Balasore, Bhadrak, and Cuttack. We joined from the ground by people who have been monitoring these developments. We're getting constantly we're getting reactions. We are again joined by Debabrata Mohanty. Debabrata, what is the sense that you get now that the major one of the major challenge will be to identify all these people who have died and then to inform their families and to send the bodies back home? See, in the Coromandel Express as well as the other passenger train, people who died mostly they're in the general bogies, people who don't have reserved tickets. So the challenge would be how to identify the bodies. Like in that particular school where the bodies have been kept, out of it, I think around 140 bodies, they could identify just about 16 to 20 bodies. So majority are still not identified. And secondly, the bodies have been totally, some limbs are lost, heads. Yes. I mean, there are several bodies that no heads. How to identify? First thing, they don't have tickets, so there is no name. And secondly, how will you there is no the body is disfigured and the bodies are started bloating up, and that particular place where the bodies are kept, say they died almost 12 15 hours back, and it is very hot, very humid, the bodies started bloating up, and after I think by evening it will be difficult to sort of identify the bodies. Right, that's a very important point, that it's been 15 hours and bodies have started bloating up. The temperature is extremely hot, and most of the people who have been who have died were in the general sort of a compartment. They were not in the sleeper class that they have tickets so that we could get a sense that who are the people. It will take some time till all of them are identified, and it's already been 15 hours. So there are multiple challenges. One is obviously the first thing is to
move out the injured and take them to the hospital, move out the people who have died from those mangled, compartments. And now, obviously, the second step will be to identify them, and obviously, then the inquiry will happen and the accountability will be fixed. So that is the situation on the ground. But can you say more or less now all those people who are trapped in those trains have been moved out now? All the injured have been taken out, or it's still Yes, the operations almost are going on? the operation is going on, because now it's difficult for a couple of reasons. One is those two general bogies of that train that is coming from Bangalore to Howrah. The general bogies, they're lying in a ditch. It's impossible to take a crane and lift them up. The only way is to cut through them, those mangled coaches. And second, it's getting very hot. I mean, though the temperature is close to 40, but it feels very humid. It feels like 50 degrees. And hats off to army people, the way they're going, they're just kind of, I mean, I spoke to a couple of army people. They don't see very positive. They sound very positive about anybody still alive in that combat. Right. So these are the details that we're getting from ground. This is a major accident that has it's a big tragedy. 280 people have died and over 900 are injured in that accident that took place in Odisha, in Balasore area. These were two passenger trains and one goods train, and obviously, since it's happened at around 7:30 on Friday, and since then the operations are underway, the rescue operations and the relief operations. The challenge obviously is to move all the injured to the hospitals. Obviously, they've been moved to different hospitals with a sheer number of people who have been injured. So that is the situation on the ground. To recap for our viewers, it's a major accident, train accident that's taken place in the recent past in country. 280 people have died, 900 are injured. This happened in Odisha, and now railway officials. We got a fresh reaction coming from the railway minister. Let's hear what he has to say. अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है, एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर, अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस ना हो उसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ इंटर हुआ सर, क्यों हुआ, कुछ पता चला? सर, एक छोटा सिंगल। We are the minister talking about the restoration and obviously the inquiry that will subsequently happen. So those are the details that we are getting from the ground. The Prime Minister was briefed about the situation. Home Minister Amit Shah was also in the meeting. They were briefed about this train accident, and now the Prime Minister, we told, will be going to Odisha, to the place where this accident took place, and also to the hospital to meet with the injured people. We will keep updating you about this tragic story all through the day. But for now, those are the details that we have. Do keep watching Mojo Story for all the updates. Goodbye from all of us here for now. We started Mojo right here in this basement. Just 4 people, 4. And now we're about to hit our first 1 million subscribers. So this is to say thank you to all of you for your support, for your respect, and for your encouragement. We've always gone to where the story is. During the pandemic, when television's big anchors were hunkered down in their studios or at their homes, we hit the road. We traveled from Delhi to Kerala, covering 30,000 kilometers in a small car, reporting from inside ICUs and inside slum tenements. Whether it's flash floods or war zones, we've always put our boots on the ground. In fact, we're just back from Punjab, tailing the Khalistani fugitive Amritpal Singh.
And through all of this, we have always put you, the people, first. In an age of partisan polarized media where most journalists are either chamcha ya morcha, we believe the story is sacred and the truth of the story is what matters. And now as we get ready for the next step, we need your help. Become a Mojo member and get first access to all our big interviews. Get a chance to ask our newsmakers questions. Get a chance to write and report for us for both our website and our channels. And also, interact with me and my colleagues directly through AMA sessions. Literally, ask me anything. Click on the join now right next to the subscribe button, and yes, also subscribe if you haven't yet, and become a Mojo member for just 159 rupees a month. Hope to see lots of you in our community. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.